We welcome the Honorable Union Minister for Home Affairs and Cooperation, Shri Amit Shah Ji, to the dais. A popular leader who has been in public service and a people's representative for decades, Shri Amit Shah Ji has keen interest in emerging technologies and is forever making efforts to bring technology to the fore in making a better and stronger nation. He has always emphasized on public-private partnership, cooperation and coordination, which is the mainstay of this two-day conference on crime and security in the age of NFTs, AI and Metaverse. Ever since he has been at the helm of Home Affairs, the Honorable Minister, Shri Amit Shah Ji, has highlighted that technology has to be harnessed in the right direction by law enforcement to spread awareness and of misuse, forming police networks for faster action, creating databases of criminal modus operandi to preempt, prevent, and detect crime, and empowering investigations with forensic technologies. It is his vision that has led to the establishment of the I4C, Indian Cybercrime Coordination Center. We are indeed honored to have him in our midst today. He is accompanied by distinguished guests who are gracing this occasion. I now request the Union Home Secretary, Shri Ajay Bhalla, to welcome the Chief Guest, Honorable Union Minister for Home Affairs and Cooperation, Shri Amit Shah Ji, with a plant as a mark of our respect. I request the Director, Intelligence Bureau, Shri Topon Deka, to present a plant to Shri Rajiv Chandrasekhar, Minister of State, Ministry of Electronics and Information Technology. I request the Director, Central Bureau of Investigation, Shri Praveen Sood, to present a plant to Shri Ajay Mishra, Minister of State, Ministry of Home Affairs. India is acknowledged as an ICT giant, a sector that contributes a substantial percentage to our GDP. The strides made by India have been largely initiated, led, enabled, and promoted by the government in active collaboration with stakeholders of the industry and academia. I invite the Union Home Secretary, Shri Ajay Bhalla, to deliver the welcome address. Very good morning to all of you, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good morning and namaste. It's my privilege to extend a warm welcome to all of you as the conference chair of this G20 conference on crime and security in the age of NFTs, AI and Metaverse. Today I have the privilege of welcoming our distinguished chief guest, Honorable Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah Ji. I also have the privilege of welcoming our esteemed guest of honor, Shri Rajiv Chandrasekhar Ji, Minister of State, Ministry of Electronics and IT, Shri Ajay Mishra Ji, Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Dr. Suman Berry, Vice Chairman Niti Aayog, and other dignitaries on the dais, distinguished delegates from G20 member nations, invited countries, international organizations, academia, industry, legal fraternity, and senior officers of central and state governments from across India. This is a conference with a difference. This is probably a first G20 conference on challenges pertaining to crime and security arising in the ever-advancing ICT sector. The uniqueness of the conference has been aided by the presence of partners from various stakeholders. On the dais, I further welcome our dignitaries who are from a variety of backgrounds. Dr. Kamakoti, Director IIT Chennai,
Dr. Bajpayee, the Vice Chancellor, National Law University, Delhi, Ms. Debajani Ghosh, President NASSCOM, Shri Nitin Kamath, founder of Zerodha. Also on the stage, I welcome my colleagues Tapan Kumar Deka, Director of Intelligence Bureau, Shri Praveen Sood, Director CBI, Shri Harshvardhan Shringla, Chief Coordinator of G20 Secretariat, Sundari Nanda, my colleague in the Ministry of Home Affairs. It's also very heartening to see the spirited response of the international community, IT sector, fintech ecosystem, and top-notch institutions for participating in this conference. Your presence signifies the immense importance and urgency with which the world views the challenges posed by NFTs, AI, and Metaverse in the realm of crime and security. The conference stands out as a unique event as it reflects our commitment to fostering a holistic and comprehensive approach to addressing the emerging complexities of the digital landscape. The vision of India's G20 presidency is to bring everyone together so that collective action can be taken for the greater good of humanity. Today, we gather here to share insights, discuss emerging trends, and collectively try to chart a path forward. The NFTs, AI, and Metaverse have brought immense opportunities and transformative changes to our societies, but they have also presented challenges in the realms of crime and security. It's our collective responsibility to confront these challenges head-on, leveraging our diverse perspectives, knowledge, and experiences to forge robust solutions. In India, we have also reached out to citizens through a cyber volunteer scheme, which is an essential part of the whole of society approach, since ICT has penetrated the lives of every citizen in some way or the other. Together, we can harness the power of collective intelligence and collaborative action to safeguard our societies, protect our citizens, and ensure a secure and prosperous digital future. Increased accessibility and communication through technology has facilitated global connectivity, besides breaking down barriers of distance and enabling people to collaborate regardless of their geographical location. This has also fostered cross-cultural understanding and knowledge sharing. Governments and policymakers need to keep pace with technological advancements to establish legal and regulatory frameworks that can address emerging challenges effectively. Adapting laws and regulations swiftly can help facilitate the investigation and prosecution of crimes related to NFTs, AI, and the Metaverse. The speed of response is critical. Promptly identifying and containing the incident, preserving evidence, and initiating appropriate actions can help minimize damage and improve the chances of successful resolution. Throughout this conference, we'll engage in thought-provoking discussions, sharing of best practices, and exploring innovative strategies to address the complexities of NFTs, AI, and Metaverse in the context of crime and security. Our aim is to foster meaningful partnerships, facilitate information exchange, and identify concrete measures that will enhance our collective ability to respond effectively to the evolving nature of the digital age. I would like to express my heartfelt gratitude to all the participants, speakers, organizers, and our knowledge partners for their invaluable contributions in making this conference a reality. Once again, I extend a warm welcome to all of you, our distinguished guests. I encourage you to actively participate and engage in fruitful discussions to work together towards a safer, more secure, and prosperous digital future. Thank you very much. Thank you, sir. NASSCOM is an Indian non-governmental trade and advocacy group whose members provide software development and IT-enabled services. It ensures the availability of best service quality and enforcement of intellectual property rights in the Indian software and BPO industry. I now invite Ms. Debajani Ghosh, President NASSCOM, to present her views.
Very good morning, everyone. Honorable Minister of Home Affairs, Amit Shahji, Honorable Minister of State for Skill Development, Entrepreneurship and Electronics and IT, Rajiv Chandrasekhar ji, Honorable Minister of State for Home Affairs, Ajay Mishra ji, Shri Ajay Kumar Bhalla, Union Home Secretary, Dr. Suman Berry, VC Niti, distinguished guests on the dais and distinguished guests in the room. I would like to start by congratulating MHA for organizing this extremely important conference on cybercrime and security in the age of emerging technologies. I feel tremendously proud that India, under its G20 presidency, decided to prioritize and make cybersecurity a key focus under G20, which is a very first. As Prime Minister Modi rightly said, cybersecurity is no longer limited to the digital world. It has become a matter of national security, not just for India, but for the world. Let me put 4 facts for your consideration through the conference. First, the digital era. It is now. It is not about the future. We are living in the digital era. So much of our information is today online, from healthcare records, personal information, financial transactions. By 2025, humanity's collective data will reach 175 zettabytes. The number 175 followed by 21 zeros is how you define a zettabyte. This data includes everything from our videos to, the financial records, our health records, every possible thing about us. Ensuring a secure environment is key for the success of a thriving digital economy like ours. Second, as Digital India, our economy today thrives on a robust digital public infrastructure network that allows for free flow of information. Businesses of all sizes, from multinational corporations to the smallest startups in India, are leveraging this infrastructure to deliver services to every part of the country. A single cyber incident can have disastrous consequences, leading to financial loss, reputational damage, and sometimes irreversible harm. Third, while cybersecurity capabilities and awareness is definitely improving, it's growing, unfortunately, the threats and sophistication of cyber attacks are also improving at the same pace, if not faster. Cyber threats have reached unprecedented levels of sophistication and frequency. According to Cybersecurity Venture, the cost of cybercrime is predicted to hit $8 trillion in 2023, that is this year, and will grow to 10.5 trillion by 2025. And last but not the least, it is a very interesting time that we are living in, where technology is becoming both the medicine as well as the disease, depending on how we humans use it. On one hand, technologies like AI can be used to significantly increase automation, speed, frequency, efficiency of attacks, while on the other hand, they can also be used to increase the speed of cyber detection, prevention, and recovery systems. We know there are bad actors amongst us. We know there are bad actors everywhere, and we know that technology will be misused in some way or the other. And that is why it is becoming so important to ensure that the good actors level up their game and start working with these technologies to build the capabilities that is needed to prevent the misuse. In our increasingly interconnected and hyper-digital world, cybersecurity is not just an important consideration. It is an imperative for progress, it is an imperative for stability, and it is an imperative for the security of citizens, enterprises, and of course, nations.
You know, given that technology does not respect any borders, international borders or otherwise, it is of utmost importance for strong global collaboration to build the capabilities to address cybercrime and defend against cyber warfare. I strongly believe that commitment to cybersecurity under India's G20 presidency is a statement of strength, resilience, and cooperation in the face of ever-evolving threat landscape. By making it a national priority, a global priority, we send a clear message that we are committed to protect our critical infrastructure, to promote economic growth, to enhance citizens' trust, and create a digital economy that is safe for all. And I'm confident that the G20 deliberations will show how we can all, not just countries, but industry, government, startups, how we can all work together to mitigate the risks, navigate the challenge, and unlock the immense opportunities that the digital era presents. Thank you very much. An entrepreneur, technocrat, Member of Parliament in the Rajya Sabha representing Karnataka, Shri Rajiv Chandrasekhar, Minister of State, Ministry of Electronics and Information Technology, is well known for his contributions. His is the ministry which makes all things E possible, like e-governance, e-commerce, e-medicine, e-infrastructure, and is the main force behind Digital India. I request him to kindly speak a few words. Our most respected Home Minister, sir, my colleague in the Council of Ministers, Ajay Mishra ji, colleagues in government, delegates, ladies and gentlemen, thank you all for being here in this very important conference, an important discussion on a very important aspect of all our futures, where we are hopefully having a conversation and sharing ideas about the future of the cyberspace and technology in general. India has a particular interest in having this conversation being a conversation that is shared by all nations, because today we are a nation with over 840 million Indians who are connected to the internet, who use the internet every day for a variety of services and purposes, and a nation where very shortly, in a couple of years, we will have 1.2 billion Indians using the internet and becoming digital Nagriks. I won't make too many points, but I certainly want to make a few points for your consideration. We are living in very interesting times, is a general statement we can make, certainly in the post-COVID world. And one of the defining attributes, defining aspects of these interesting times is the rapid, accelerated digitalization of our lives. Governments are digitalizing fast, consumers' lives are digitalizing fast, enterprises and services are digitalizing fast. That digitalization is what is causing the almost ubiquitous presence of the internet and platforms on the internet. India is a sharp, clear example, a beacon indeed to the rest of the world in terms of how technology and the internet has been harnessed to transform decades-old dysfunctional governance into a modern, responsive governance, rebuild trust between government and citizens, and generally a beacon and a case study for the countries of the world in how technology has been harnessed to do good. And in a lot of ways, the Digital India slogan of power to empower is represented by the last 9 years of progress that technology has made in governance, in democracy, in public services, in public infrastructure, and in transforming citizens' lives. It is clear and obvious to almost every participant, observer, spectator of the progress of the world that technology and power, technology has always had the power to do good, and in the last few years, last few decades rather, technology has really demonstrated this power for good. But as we sit here today, we should also acknowledge that in the last few years, technology, and in particular the internet, has also become a force for
harm and bad. And that goes to the central theme of this conference and the deliberation, that technology, while it has delivered good, is also increasingly becoming a force for user harm, toxicity, misinformation, and at the other end of the spectrum, criminality. And therefore, it is absolutely necessary that we understand this trend, the growing use of tech, the growing use of these platforms to cause harm and to cause criminality. I will certainly share, and I'll take up from what Debjani broadly mentioned, that it is important that we understand, as we today sit in the G20 and resonate India's and our Prime Minister's vision of Vasudhaiva Kutumbakam, that in a lot of ways the future of the cyberspace, the present and the future of the cyberspace, requires the world to cooperate to make it more safe and more trusted. The internet and tech in specific, tech in general, is an area where borders are not recognized. A victim is in one jurisdiction, the crime is another jurisdiction, and the perpetrator in a third jurisdiction. And therefore, conventional law and order, conventional responses to security challenges do not work in the cyberspace. Compounding this is, of course, the increasing and almost embedded trend of platforms on the internet to encourage anonymous use, encourage untraceable use of their platforms. So it is certainly clear that the challenges of toxicity, user harm, and criminality on the internet is very, very different, requires a very different set of responses from governments and law enforcement agencies around the world as compared to what we see in the physical world and what we have seen in the physical world. Cyber crimes in general, like I said, are extra-jurisdictional, and therefore there is an increasing need for, as I will stress here, and for us to have conversations today and on a continuing basis for a framework of regulations, cooperation and partnership between nations in not just investigation, but in terms of development of tools, development of protocols, in terms of how do we address these rising challenges and the rising threats to the safety and trust of hundreds and millions of digital users all around the world. I will certainly not belabor this point, but I again thank you and thank the Ministry of Home Affairs for organizing this very important conversation that is defining for our world as we know it today, and will certainly shape the future of our world, our economies, trade, and the lives of our citizens in the future as well. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. The Ministry of Home Affairs has developed a cybercrime volunteer framework which enables the participation of citizens in tackling the menace of cybercrime. It brings together citizens having a passion to serve the society by making cyberspace clean and safe. Any Indian citizen can register in 3 categories: cyber volunteer, unlawful content flagger, cyber awareness promoter, and cyber expert. 7 institutions, Amrita Vishwa Vidyapeetham, IIT Jodhpur, IIT Madras, Nalsar University of Law, National Law University Delhi, National Forensic Sciences University, and Rashtriya Raksha University are currently associated. Ladies and gentlemen, these cyber volunteers are bright young minds brimming with fresh zeal and energy to spread awareness in the community and serve as domain experts. I now request our chief guest, Honorable Union Minister for Home Affairs and Cooperation, Shri Amit Shah Ji, to launch the Cyber Volunteer Squads by presenting them with a banner. Our distinguished guests are also requested to join the Honorable Minister. I request cyber volunteers of IIT Madras, along with Dr. V. Kamakote, Director, to receive the banner.
I request cyber volunteers of National Law University, Delhi, along with Dr. G.S. Bajpai, Vice Chancellor, to receive the banner. I request cyber volunteers of Amrita Vishwa Vidyapitham, along with Dr. Krishna Sri Achudan, Dean, Postgraduate Program, to receive the banner. I request cyber volunteers of IIT Jodhpur, along with Sri Soumitra Kumar Sanadhya, Dean, Digital Transformation, to receive the banner. I request cyber volunteers of Nalsar University of Law, along with Dr. Krishna Deva Rao, Vice Chancellor, to receive the banner. I request cyber volunteers of National Forensic Sciences University, along with Professor Naveen Kumar Chaudhary, Dean, School of Cybersecurity and Digital Forensics, to receive the banner. I request cyber volunteers of Rashtriya Raksha University, along with Sri Nidish Bhatnagar, Director, to receive the banner. I would also like to request the Honorable Union Minister for Home Affairs and Cooperation, Shri Amit Shah Ji, to kindly release the conference medallion for this conference on crime and security in the age of NFTs, AI, and Metaverse. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, it is now my privilege to request the Honorable Union Minister for Home Affairs and Cooperation, Shri Amit Shah Ji, to kindly deliver the inaugural address. English translation is available on Channel 2 in the headsets kept in front of you. I'm sorry, Channel 1. G20 समिट की इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान राजीव चंद्रशेखर जी, श्री अजय कुमार मिश्रा जी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्रीमान सुमन बेरी जी, भारत सरकार के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी, उपस्थित सभी संस्थाओं से मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, आज के सम्मेलन में देश भर से, दुनिया भर से आए हुए प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों, सम्मानित अतिथियों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं भारत में आपका स्वागत करते हुए
उस भूमि पर आए हैं, इस भूमि पर आपका स्वागत है जहां विरासत और टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट दोनों एक साथ चल रहे हैं। एनएफटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स के युग में क्राइम और सिक्योरिटी, इस विषय पर G20 सम्मेलन में आज मेरे साथ शामिल होने के लिए भारत सरकार की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस सम्मानित सभा में तेजी से जुड़ रही दुनिया में साइबर रेजिलेंस स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता पर मैं जोर देना चाहूंगा। आप सभी जानते होंगे कि इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता का घोषवाक्य वसुधैव कुटुंबकम है, अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है, जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यह वाक्य शायद आज की डिजिटल दुनिया के लिए सबसे अधिक रिलेवेंट है। टेक्नोलॉजी सभी कन्वेंशनल जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल तथा फाइनेंशियल सीमाओं को तोड़कर पार पहुंच चुकी है। आज हम सब एक बड़े ग्लोबल डिजिटल विलेज का हिस्सा है। हालांकि टेक्नोलॉजी मानव कम्युनिटी और देशों के और करीब लाने वाला एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स तथा स्वार्थी वैश्विक ताकतें भी हैं जो नागरिकों और सरकारों को आर्थिक तथा सामाजिक नुकसान पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यह सम्मेलन अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के कोऑर्डिनेटेड एक्शन की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है, साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक सुरक्षा का मामला बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के ह्यूमन एस्पेक्ट पर जोर दिया है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के उपयोग में कंपैशन और सेंसिटिविटी सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इमोशंस ऑफ थिंग के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत जमीनी स्तर पर उभरती टेक्नोलॉजी को अपनाने में अग्रणी रहा है। हमारा उद्देश्य है समाज के सभी वर्गों के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को अधिक सुलभ और अधिक किफायती बनाना है। इस क्षेत्र में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की है। आज 840 मिलियन भारतीयों की ऑनलाइन मौजूदगी है, जो बहुत बड़ा गर्व का विषय भारत के लिए है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2025 तक और 400 मिलियन भारतीय डिजिटल दुनिया में प्रवेश करेंगे। 9 वर्षों में इंटरनेट कनेक्शन में 250% से ज्यादा वृद्धि हमने दर्ज की है। प्रति जीबी डेटा की लागत में हम 96% कटौती करने में सफल रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हमने 5 ही साल में 500 मिलियन नए बैंक अकाउंट खोले हैं और 303 मिलियन रुपए डेबिट कार्ड वितरित किए हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में भी हमने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की है। 2022 में भारत 90 मिलियन लेनदेन के साथ वैश्विक डिजिटल भुगतान में अग्रणी बना हुआ है। अब तक भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन 35 ट्रिलियन रुपये पार कर गया है। वैश्विक डिजिटल भुगतान का 46% भारत में है। 2017-18 से लेनदेन की मात्रा में आज हमने 50% से ज्यादा बढ़ोतरी की है। जनधन आधार मोबाइल से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। 1.38 बिलियन आधार डिजिटल आइडेंटिटी हमने जनरेट कर चुके हैं। 52 मंत्रालय और 300 से अधिक योजनाओं को इसमें कवर कर लिया गया है। 300 मिलियन रुपए की राशि सीधी बैंक खातों में ट्रांसफर हो रही है। डिजी लॉकर में लगभग 6 बिलियन डॉक्यूमेंट स्टोर्ड है।
कोविन ऐप के माध्यम से हमने 2.2 बिलियन कोविड वैक्सीनेशन सफलता के साथ पार किया है। भारत नेट के तहत 600,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है और ये गति अभी आगे जारी है। उमंग ऐप नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है जिसपे 53 मिलियन रजिस्ट्रेशन है। सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी के इनिशिएटिव ने एक दशक में भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। मित्रों, इसके साथ साथ ही साइबर खतरों की संभावना भी बढ़ी है। इंटरपोल की वर्ष 2022 की ग्लोबल ट्रेड समरी रिपोर्ट के अनुसार रैंसमवेयर, फिशिंग, ऑनलाइन घोटाले, ऑनलाइन बाल यौन शोषण और हैकिंग जैसे साइबर अपराध की कुछ प्रवृत्तियां विश्व भर में गंभीर खतरा पैदा कर चुकी है। ऐसी संभावना है कि भविष्य में ये ट्रेंड और बढ़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में यह सम्मेलन G20 प्रेसिडेंसी की एक नई और अनूठी पहल है। G20 सम्मेलनों में साइबर सुरक्षा पर अब तक का यह पहला सम्मेलन है। G20 ने अब तक आर्थिक दृष्टिकोण से डिजिटल परिवर्तन और डेटा फ्लो पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन क्राइम और सिक्योरिटी एस्पेक्ट को समझना और उसका समाधान निकलना बेहद आवश्यक है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास है NFT, AI, मेटावर्स तथा अन्य इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के युग में कोऑर्डिनेटेड और कोऑपरेटिव तरीके से नए उभरते हुए खतरों के लिए समय पर प्रतिक्रिया देकर हमने क्राइम वर्ल्ड से आगे जाने का प्रयास करना चाहिए। G20 के मंच पर साइबर सिक्योरिटी पर अधिक ध्यान दिए जाने से अहम इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा और संपूर्णता सुनिश्चित करने में सकारात्मक योगदान हमें प्राप्त हो सकता है। G20 के मंच पर साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम पर विचार विमर्श करने के लिए इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क के विकास में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में ग्लोबल कोऑपरेशन को बल मिलेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल पब्लिक गुड्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त और सुरक्षित बनाने और टेक्नोलॉजी की शक्ति का बेहतर उपयोग करने के लिए एक सुरक्षित और सक्षम अंतर्राष्ट्रीय ढांचे को बढ़ावा देना है। मुझे विश्वास है कि 2 दिन की इस कॉन्फ्रेंस के 6 सत्रों में इंटरनेट गवर्नेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, डिजिटल ऑनरशिप के संबंधित लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज, AI का रिस्पॉन्सिबल यूज और डार्कनेट जैसे विषयों में इंटरनेशनल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क पर सार्थक चर्चा होगी। मुझे खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी इस पहल को रिस्पॉन्ड किया है। इस सम्मेलन में G20 सदस्यों के अलावे 9 अतिथि देश और 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी भाग ले रहे हैं। मित्रों, इस डिजिटल युग के मद्देनजर साइबर सिक्योरिटी ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू बन गई है, जिसके इकोनॉमिकल तथा जियोपॉलिटिकल प्रभावों पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। टेररिज्म, टेरर फाइनेंस, रेडिकलाइजेशन, नार्को ट्रेड, नार्को टेरर लिंक्स और मिस इन्फॉर्मेशन सहित नई उभरती पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्षमता को मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है। हमारी कन्वेंशनल सिक्योरिटी चुनौतियों में डायनामाइट से मेटावर्स और हवाला से क्रिप्टो करेंसी तक का परिवर्तन दुनिया के लिए निश्चित चिंता का विषय है और हम सभी को साथ मिलकर इसके खिलाफ साझी रणनीति तैयार करनी होगी। टेररिस्ट हिंसा को अंजाम देने के लिए, युवाओं को रेडिकलाइज करने के लिए तथा वित्त संसाधन जुटाने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। वर्चुअल एसेट्स के रूप में नई तरीकों का उपयोग आतंकवादियों द्वारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी किया जा रहा है। टेररिस्ट अपनी पहचान छिपाने के लिए और रेडिकल मटेरियल को फैलाने के लिए डार्क नेट का भी उपयोग कर रहे हैं।
हमें डार्क नेट पर चलने वाली इन गतिविधियों के पैटर्न को समझना होगा और उसके उपाय भी ढूंढने होंगे। वर्चुअल एसेट माध्यमों के उपयोग पर नकेल कसने के लिए एक मजबूत और कारगर ऑपरेशनल सिस्टम की दिशा में हमें एक साथ आकर सोचना होगा। मेटावर्स जो कभी साइंस फिक्शन था, अब वास्तविक दुनिया में कदम रख चुका है। मेटावर्स से आतंकवादी संगठनों के लिए मुख्य रूप से प्रचार, भर्ती, प्रशिक्षण, इसके नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमजोर मानसिकता वाले लोगों का चयन करना और उन्हें लक्ष्य बनाना और उनकी कमजोरियों के अनुरूप मटेरियल तैयार करना बहुत आसान हो जाएगा। मेटावर्स यूजर की पहचान की सच्ची नकल करने के लिए अवसर भी पैदा करते हैं, जिसे डीप फेक कहते हैं। व्यक्तियों के बारे में बेहतर बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग करके अपराधी यूजर का रूप धरने और उनकी पहचान चुराने में सक्षम हो जाएंगे। साइबर अपराधों द्वारा रैंसमवेयर हमलों और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा की बिक्री, ऑनलाइन उत्पीड़न और बाल शोषण से लेकर फर्जी समाचार और टूल किट के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेटेजिक लक्ष्य बनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। ऐसी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है, क्योंकि इनकी गतिविधियों का सीधा प्रभाव सुरक्षा, कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे अपराधों को और अपराधियों को दोनों को हमें रोकना है। अगर रोकना है तो कन्वेंशनल जियोग्राफिक बॉर्डर से ऊपर उठकर सोचना होगा और हमें इस दिशा में बहुत काम भी करने की जरूरत है। डिजिटल युग में टारगेट हमारे भौतिक संसाधन नहीं होते हैं, बल्कि हमारी ऑनलाइन काम करने की क्षमता को टारगेट किया जाता है। कुछ मिनट के लिए भी ऑनलाइन नेटवर्क में व्यवधान बहुत घातक हो सकता है। आज दुनिया की सभी सरकारें गवर्नेंस और पब्लिक वेलफेयर में डिजिटल माध्यमों को प्रोत्साहन दे रही है। इस दिशा में आवश्यक है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नागरिकों का विश्वास बना रहे। डिजिटल स्पेस में असुरक्षितता नेशनल स्टेट की लेजिटिमेसी को और संप्रभुता के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। हमारा इंटरनेट विजन न तो राष्ट्र को अस्तित्व के संकट में डालने वाला अत्यधिक फ्रीडम वाला होना चाहिए और न ही डिजिटल फायरवॉल जैसे आइसोलेट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर से बना हुआ होना चाहिए। भारत ने कुछ ऐसे ओपन एक्सेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल खड़े किए हैं जो कि समग्र विश्व में मिसाल बने हुए हैं। हमारा डिजिटल आइडेंटिटी का आधार मॉडल, रियल टाइम फास्ट पेमेंट का यूपीआई मॉडल, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC, हेल्थ के क्षेत्र में ओपन हेल्थ सर्विस नेटवर्क जैसे और भी है। आज दुनिया को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नई व्यवस्था की जरूरत है जो इंफॉर्मेशन और फाइनेंस के प्रवाह में मध्यस्थता करे। इससे दुनिया के देशों को अपने नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में सुविधा होगी। मित्रों, मैं कुछ सुरक्षा उपायों के लिए भी बात करना जरूर चाहूंगा। दुनिया के कई देश साइबर अटैक के शिकार हुए हैं और यह खतरा दुनिया भर की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर मंडरा रहा है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार 19 से 23 के दौरान साइबर हमलों से दुनिया को लगभग $5.2 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता था। मैलिशियस थ्रेट एक्टर्स द्वारा क्रिप्टो करेंसी का उपयोग इसकी पहचान और रोकथाम को और जटिल बना देता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक समान साइबर कार्यनीति की रूपरेखा तैयार करने, साइबर अपराधों की रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, एनालिटिकल टूल्स डिजाइन करने के लिए, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करने के लिए, साइबर हाइजीन सुनिश्चित करने के लिए और हर नागरिक तक साइबर जागरूकता के प्रसार करने जैसे क्षेत्रों में बहुत काम किया है। अब भारत के सभी पुलिस थानों में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS को क्रियान्वित कर दिया गया है। साइबर अपराध के विरुद्ध
व्यापक जवाबी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C की स्थापना की है। भारत सरकार ने साइट्रेन पोर्टल नामक एक विशाल ओपन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म को भी निर्माण किया है। शायद साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। आगे के लिए सोचने के लिए हमारी ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस, जब आप सभी लोग विचार मंथन करेंगे, एक सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस सुनिश्चित करने हेतु मैं कुछ बिंदुओं पर इस सभा का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा आग्रह होगा कि सम्मेलन में आप इन बिंदुओं पर जरूर विचार करें। डिजिटल अपराधों को काउंटर करने के लिए बने सभी देशों के कानून में एक रूपता लाने का प्रयास करना चाहिए। एक रूपता लाने के साथ साथ सभी देश के कानूनों में एक दूसरे के देश में हुए साइबर अपराधों को पकड़ने के लिए और प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था की भी स्पेस रखनी पड़ेगी। साइबर अपराधों के बॉर्डरलेस नेचर को ध्यान में रखते हुए देशों के भिन्न भिन्न कानूनों के तहत कॉमन रिस्पॉन्ड करने की व्यवस्था हमें खड़ी करनी होगी। इस क्षेत्र में ग्लोबल कोऑपरेशन से साइबर सिक्योरिटी बेंचमार्क्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस और रेगुलेशन में तालमेल बनाने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भी हमने सोचना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि इस दिशा में यह सम्मेलन एक ठोस एक्शन प्लान बनाकर विश्व के सामने रखेगा। साइबर सिक्योरिटी नीतियों में इंटीग्रेटेड और स्टेबल अप्रोच से इंटरऑपरेटिबिलिटी में आसानी होगी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में ट्रस्ट बढ़ेगा और एजेंसियों के प्रोटोकॉल और रिस्पांस गैप में कमी आएगी। राष्ट्र के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित बनाने के लिए सदस्य देशों के बीच उद्योग और शिक्षा जगत के सक्रिय समर्थन से रियल टाइम साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस को साझा करना इस समय की मांग है। साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग और उन पर कार्यवाही में सभी देशों की साइबर एजेंसियों में अधिक तालमेल करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाना भी समय की मांग है। शांतिपूर्ण, सुरक्षित, प्रतिरोधी और ओपन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वातावरण के निर्माण के लिए संयुक्त प्रयासों से सीमा पार साइबर अपराधों की जांच में सहयोग आज की मांग है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आपराधिक प्रयोग पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अनुरूप तेजी से साक्ष्यों का संरक्षण, जांच और सहयोग हमने बढ़ाना होगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के कारण उभरते खतरों से निपटने के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीमों को सुदृढ़ बनाना होगा। प्रभावी प्रिडिक्टिव, प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव एंड रिकवरी एक्शन हेतु 24/7 साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के बीच में भी हमने सहयोग और कोऑपरेशन बढ़ाना पड़ेगा। साइबर थ्रेट लैंडस्केप का स्वरूप राष्ट्रीय सीमाओं के पार तक फैल गया है, जिसके कारण साइबर क्राइम से प्रभावी रूप से लड़ने के लिए राष्ट्रों, संगठनों और स्टेक होल्डरों द्वारा कोऑपरेशन और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान का भी प्लेटफॉर्म बनाना समय की मांग है। रिस्पॉन्सिबल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल AI और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी गवर्नेंस फ्रेमवर्क का निर्माण करने का समय आ गया है। डिजिटल करेंसी से लैस साइबर क्राइम में वृद्धि को देखते हुए राष्ट्रों के बीच एक डेडिकेटेड कॉमन चैनल की आवश्यकता है, ताकि ऐसी वित्तीय अनियमितताओं को रोका जा सके। NFT प्लेटफॉर्म की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन से विश्वास बढ़ेगा और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगेगी। अंत में मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहूंगा, कोई भी देश या संगठन अकेले साइबर खतरों का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके लिए एक संयुक्त मोर्चे की आवश्यकता है, एक संयुक्त प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। हमारे भविष्य ने हमें अवसर दिया है कि हम संवेदनशीलता के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करने और सार्वजनिक सुरक्षा तथा संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अटल रहे। हालांकि यह कार्य अकेले सरकारों के द्वारा संभाला नहीं जा सकता, सरकारों ने भी सबको साथ में लेना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य साइबर सक्सेस वर्ल्ड का निर्माण करना है, न कि साइबर फेल्योर वर्ल्ड का। साथ मिलकर हम सभी के लिए एक सुरक्षित,
और समृद्ध डिजिटल भविष्य सुनिश्चित करने हेतु इन टेक्नोलॉजी की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। आइए हम सहयोग करने, विचार साझा करने और अंतर्राष्ट्रीय साझी बनाने के लिए इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस का उपयोग करें। अंत में इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए मैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वंदे मातरम। Thank you very much, sir. I take this opportunity to thank the Honorable Union Minister for Home Affairs and Cooperation, Shri Amit Shah ji, for gracing this occasion. My sincerest gratitude to everyone who are present in this gathering today. My special thanks to the cyber volunteers and to all the stakeholders for your enthusiastic participation. I hope the technical sessions for the next 2 days will be of immense interest. We hope that the conversations that start here will only serve to keep the light burning to ensure a safe and enabled cyberspace. With that, we come to an end of this inaugural session. I request you to be seated for the first session of the day at 12:45 p.m. Thank you.